Hello everyone, welcome to Infinity. So today I have Moto H30 Pro जो कि flagship फ़ोन है Motorola का and let's quickly unbox it and see क्या क्या content है box में. On top we have the phone itself जिसमें back cover pre-applied है, that's nice. This is the Stardust white color. We have the manual guides, the SIM ejector pin and your Type C to Type C cable. एंड 68 वॉट फास्ट चार्जर इन द बॉक्स. ये एक और कलर में आता है, दैट इज़ कॉस्मोस ब्लू. फ़ोन के बटन प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो राइट साइड में हमें पावर बटन्स एंड वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है. फिंगरप्रिंट पावर बटन में एम्बेडेड है. नीचे की तरफ हमें स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट एंड सिम ट्रे देखने मिल जाता है. एंड लेफ़्ट पूरा क्लीन है. ऑन टॉप वी हैव सेकेंडरी माइक, डुअल सिम सपोर्ट करता है एंड आप जैसे देख सकते हैं रबड़ कोटिंग है सिम ट्रे के चारों तरफ. एंड फ़ोन ऑल्सो कम्स विद IP52 वाटर रेपेलेंट कोटिंग. वेल द बैक ऑफ द फ़ोन कम्स विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन एंड दिस इज़ द स्टारडस्ट वाइट कलर एज आई हैव टोल्ड अर्लियर. फ़ोन का जो थिकनेस है वो 8.8 mm है एंड वेट अंडर 200 ग्राम है. वेल मोटो 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड 5 वॉट का रिवर्स वायरलेस शेयर भी सपोर्ट है एंड इट ऑल्सो हैज़ दैट USB 3.1. वेल द डिस्प्ले ऑफ दिस फोन, इट इज़ अ फ्लैगशिप डिस्प्ले. इट कम्स विद 6.7 इंच POLED 10-bit पैनल. HDR10+ का सपोर्ट है. फास्ट 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है. गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आता है. The phone comes with stock Android that is based on MyUX. कोई भी bloatware pre-installed नहीं था apart from Facebook and we can uninstall that app also. Full HD plus screen होने के बावजूद भी screen काफ़ी bright है and जो panel है वो काफ़ी sharp है. Real world usage, it feels flagship. Day to day multitasking, all are super smooth. The phone comes with Android 12 out of the box, that is great. Well, talking about the performance of the phone, it is powered by newly announced Snapdragon 8 Gen 1 processor, which is based on 4nm architecture, and it is a very powerful chipset in this segment. वेल फ़ोन सिर्फ एक ही स्पेक वेरिएंट के साथ आता है जो कि 8GB LPDDR5 रैम एंड 128GB ऑफ UFS 3.1 स्टोरेज. माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है इसमें, सो यू कांट एक्सपैंड द स्टोरेज, सो यू नीड टू रिलाई ऑन दैट 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज. Well, the phone comes with fairly sized battery that is 4800 mAh and full HD screen होने के कारण बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए. And to top up that big 4800 mAh battery, it comes with 68 watt turbo power charger in the box. Well, talking about the optics, it comes with triple camera setup. It has two 50 megapixel sensor and 2 megapixel depth sensor. जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का वो ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है एंड द फ्रंट कैमरा हैज़ द वॉपिंग 60 मेगापिक्सल सेंसर एंड इट कैन रिकॉर्ड 4K वीडियो. जस्ट लुक एट सम कैमरा सैम्पल्स हियर. Well, this is the cheapest Snapdragon 8 Gen 1 phone till now. Because it is priced at 50K, but with SBI card offer you are getting this at 45K. Well, the phone supports 13 5G bands and it also come with Wi-Fi 6E and it also has that stereo speaker. जो सबसे बड़ा highlight है Moto S30 Pro का वो है इसका stock Android experience. First impression में फ़ोन काफ़ी तगड़ा लग रहा है but let me check in depth and I'll tell you about the performance, battery life in my full review. So guys, that's it from my side. I'll see you soon in the next one. Take care. Bye bye.